Anyway, so now we're doing binomial expansion. ठीक है. So basically एक होता है हमारे पास polynomial, ठीक है, और एक होता है हमारे पास binomial. सही है. Bi का मतलब होता है 2, ठीक है. Nomial can be any expression, ठीक है, any expression that has two terms. Well, hence we call it binomial. Trinomial क्या होगा? Trinomial होगा an expression that has 3 terms, ठीक है. Polynomial जो होता है उसमें आपके नंबर ऑफ टर्म्स पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और आपका पावर भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है. बायनॉमियल में हाउएवर वी नो कि आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स होंगे, ऑल्दो समटाइम्स यू विल हैव 3 आल्सो, लेकिन वो 3 को भी हम कंप्रेस करके 2 बना लेते हैं. वो जब जब व्हेन द टाइम कम्स वी विल हैव अ लुक. सो अब बायनॉमियल एक्सपेंशन का पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला, व्हिच व्हेन आई राइट यू गाइस विल प्रोबब्ली वंडर कि व्हाट एम आई राइटिंग, बट डोंट वरी अबाउट इट. इट्स NCR a raised to the power n minus r b raised to the power r. ठीक है, दिस इज फॉर दोज हु आर प्रोबब्ली डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, ये फॉर्मूला देख के I can guarantee that you're probably freaking out, but don't worry. R start होता है from 0, 1, 2, 3, and then it goes all the way to n. So yeah. अब पहले तो देखते हैं कि बायनॉमियल हम पढ़ते क्यों हैं. What exactly is the objective behind studying binomial? ठीक है, APGP के जब हमने कुछ क्वेश्चंस किए तो हमें आइडिया हो गया था ना कि हाँ ये हम मॉडलिंग के लिए पढ़ते हैं APGP. इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस भी होती हैं. इनफैक्ट वी डिड अ क्वेश्चन वेयर वी वो लोन रीपेमेंट वाला और वेट लॉस वाला. तो इस तरह से हम देखते हैं कि बायनॉमियल हम क्यों पढ़ते हैं. ठीक है, इसके सच कोई एप्लीकेशन आई एम नॉट अवेयर ऑफ एन एप्लीकेशन, बट या वैसे इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है ये देखते हैं. So let's say you have 1 plus x the whole thing square. ठीक है, I ask you to expand this. I'm sure कितने students in class में? We have 9 students, 8 students, right? So all 8 of you will be able to do it without having to, without breaking a sweat, right? 1 square plus 2x plus x square, nothing to worry about. If I ask you to do 1 plus x the whole thing cube, ठीक है, तब भी I'm confident that all of you will be able to do it. But if I ask you to find out 1 plus x the whole thing to the power 5, इसमें हो सकता है कि आप लोग थोड़ी गड़बड़ करें या गड़बड़ ना भी करें तो probably just lose your patience and be like इस चीज में तो बहुत टाइम लगेगा, we're not doing this. So this is where the whole binomial expansion formula comes in. So binomial expansion का मतलब क्या है? It's a formula which we're gonna use to expand a binomial. ठीक है, binomial का मतलब क्या? Binomial का मतलब an expression that has 2 terms. ठीक है, अच्छा, अब how exactly are we gonna use the formula? Let's see. पहले तो जरा ये सेटल करते हैं कि हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी होंगी. अगर हम करेंगे 1 plus x the whole thing square, so just so you guys know, इसमें होगा हमारे पास 1 plus 2x plus x square. तो पावर 2 है तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? हमारे पास 3 टर्म्स हैं. अगर हमारे पास होता 1 plus x the whole thing cubed, तो 1 plus x the whole thing cube निकालने के लिए हम करेंगे क्या? पहले तो जरा ये देख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे टर्म्स कितनी हैं. 1 plus x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 plus x the whole thing square की एक्सपेंशन से, ताकि वो अल्टीमेटली 1 plus x क्यूब बन जाए. तो हो जाएगा आपका 1 plus 2x plus x square plus x plus 2x square plus x cube. Now let's write this nicely. So we're looking at x cube plus 3x square plus 3x plus 1. So यहाँ पे हमारे पास जब हमारे पास था 1 plus x the whole thing cubed, so how many terms do we have? We have a total of 4 terms. So अगर हमारे पास पावर और टर्म्स का जरा हम एक जायजा लें, let's see if we can pick up a pattern. ठीक है, और ये हम किसकी बात करें? बायनॉमियल की बात कर रहे हैं. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स. अगर 1 plus x पे पावर होती 1, ठीक है, 1 plus x the whole thing to the power 1, so it's no brainer कि हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी होती 2 होती. अगर 1 plus x the whole thing square है तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं. अगर 1 plus x the whole thing cubed है तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? हमारे पास 4 टर्म्स हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 plus x the whole thing to the power 5 है, so टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 6. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 होंगी. अगर हमारे पास 1 plus, इसको हम जनरलाइज करते हैं. ठीक है, वी ऑलवेज व्हेन वी डूइंग मैथ we sort of like to generalize that we can apply it everywhere. ठीक है, so अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो हम पावर n है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी आफ्टर बी एक्सपैंडेड? n plus 1. ठीक है, सो जनरलाइज करने का फायदा ये होता है कि हमें एक रूल मिल जाता है. ठीक है, वी एंड अप एस्टैब्लिशिंग अ रूल दैट दिस इज समथिंग दैट विल ऑलवेज हैपन. ओके,
So if I want to expand 1 plus x, the whole thing to the power 5, so I will have to use this formula, the binomial expansion formula. ठीक है? अच्छा, अब इसको use कैसे करना है? This is where you guys need to pay close attention. अच्छा, before we do this, I want you guys to locate something in your calculator, वो जो C वाली की होती है. It's just underneath AC. ठीक है, उसको देखने बहुत है, और जब मिल जाए तो मुझे बता दें. Give me a thumbs up or something so that I know. Sir, where is it? Just underneath AC. AC जो बटन है ना आपका, उसके बिल्कुल नीचे होगा. खैर मैं काम करता हूँ, इसकी पिक्चर लेके भेज देता हूँ. Sir, that's the division. So, Yeah, division. हाँ, exactly. Division sign जो की है आपकी, अगर आप वो प्रेस करें, but before pressing it, if you press shift, तो you'll notice कि आपके कैलकुलेटर में C आ जाएगा एक. ठीक है, so can you guys just do that once ताकि मुझे पता चल जाए. Yes, sir, found it. ठीक है, great. अच्छा, अभी इसको यूज नहीं कीजिएगा, अभी of course you don't know how to use it. Let's learn how to use it. ठीक है, so here's how we're gonna start. फॉर्मूला अपने सामने रखते हैं, NCR a raised to the power n minus r b raised to the power r. अब इसमें we need to know what a, b and c, right? Yeah. Sir, n का जो पहला वाला n है, it's a power. Yeah, मैं भी बता रहा हूँ. ये है basically a plus b to the power n. सही है. So you can see that a is equals to 1. So yeah, b is equals to x and 5 is n. और r को हम रखेंगे, we're going to start from 0 and then we're going to go all the way to the power which is 5. ठीक है, just hang in there, अभी समझ आ जाएगा, nothing to worry about. So here's how we're going to do it. So we're going to say 5c0 1 raised to the power, because that's what a is, 5 minus 0 and x raised to the power 0. ठीक है, x raised to the power r. ये क्या था? ये हमारा r0 था. अब हम r को रखते हैं 1. That means 5c, and I want you guys to write this vertically. Maybe आप लोगों ने पहले स्कूल में horizontally किया हो. I don't prefer that. I prefer that you write it vertically. और फिर end में हम इसको Sir, horizontally क्या sir, वो plus कर देते हैं. हाँ, 5c1 1 raised to the power 5 minus 1, so that's 4 x to the power 1. फिर हम r को रखेंगे 2. That means 5c2. अभी इसको evaluate नहीं कीजिएगा. We'll do that in the next step. Okay. 5c2 1 raised to the power 3 x raised to the power 2. फिर हम r को रखते हैं 3. That means 5c3 1 raised to the power 2 x raised to the power 3. फिर हम r को रखेंगे 4. That means 5c4 1 raised to the power, oops, sorry, 5 minus 4, so that's 1. मैंने गलती से 4 लिख दिया. X to the power 4. And then 5c5 1 raised to the power 0 x raised to the power 5. ठीक है. अच्छा, अब ये थी हमारी r equals to 5. Now what we're gonna do is we're gonna start evaluating this. ठहरो जरा मैं इसको नीचे शिफ्ट कर लूं ताकि जरा थोड़ी जगह मिल जाए. अब हम इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे, और इसको बल्कि मैं इसके आगे लिख लेता हूँ. Sir, जो 1 के साथ पावर है उसका ऑर्डर कोई पैटर्न है या फिर how do we know which power to put with? मैं बता रहा हूँ. So basically हम करते हैं 5 minus 0. जैसे for example over here we're going to do 5 minus 0, फिर हम करेंगे 5 minus 1, फिर हम करेंगे 5 minus 2, फिर हम करेंगे 5 minus 3, 5 minus 4, and then 5 minus 5. That's how we do it. Or you can think of it this way कि पहली टर्म के साथ जो पावर्स हैं आपकी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती हैं, दूसरी टर्म के साथ जो पावर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में चलती हैं. And then दूसरी टर्म का किस तरह से वर्क आउट? दूसरी टर्म पे जो c के बाद वाली वैल्यू होती है वही पावर होती है. जैसे c2 है तो x2 है. ठीक है, we'll do plenty of questions. शुरू में होता है ये कंफ्यूजन कि कौन सी पावर कहाँ पे रखनी है. ठीक है, समझ आ जाएगा ये. अच्छा, अब हम करते हैं इनको इवैल्यूएट वन बाय वन. ना अगर आप लोग अपने कैलकुलेटर में निकालो 5c0, कैसे निकालोगे? पहले 5 रखोगे, फिर यू प्रेस c एंड देन यू राइट 0. सो यू नोटिस कि आपका आंसर आ रहा है 1. सही है. फिर आ जाएगा 1 raised to the power 5 which is also 1. फिर आ जाएगा x raised to the power 0 which is also 1 by the way. ठीक है, anything raised to the power 0 you guys know very well is equal to 1. तो ये आ गई हमारी पहली टर्म. दूसरी टर्म के लिए हम करेंगे 5c1. So can you guys do 5c1 in your calculator and tell me what the answer is? 5. 5.
1 को किसी पावर पे लगा लो 1 ही रहेगा, x to the power 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. So that means ये आपका टोटल 5x हो गया. Sir, फिर how do you press C? शिफ्ट दबा के डिवीजन की. Okay, okay. ठीक है. Now 5c2 मुझे कोई बता सकता है क्या होगा? 10. It's going to be 10. ठीक है. अच्छा, how about मैं इस पूरे इसको क्रॉस कर दूं? क्यों? How about I just completely ignore it? Because it's 1 to the At power. the end, the answer is going to be 1. Yeah, because One. it's 1. So at the end, like Ali said, the answer is just going to be 1. So why go through the pain of, plugging it, finding out the values one by one? So cross out it. So 10 x पे क्या होगी? X पे power square होगी. So we're looking at 10x square. फिर 5c3 निकालें अपने कैलकुलेटर में. So you'll notice 5c3 जो है आपका is also equal to 10x cube. तो ये भी आपका 10x cube आ गई. 5c4 I believe is going to be 5. Yeah. So you get 5x to the power 4. That means 5x to the power 4. 5c5 आपका 1 होगा और ये आपका सीधा x to the power 5 आ जाएगा. Now once you've done this, once you've written it horizontally, then you write it nicely. कि 1 plus x to the power 5 की जो expansion है is basically 1 plus 5x plus 10x square plus 10x cube plus 5x to the power 4 plus x Plus to the x. power 5. ठीक है, this was just the very first example. ठीक है, और अभी अगर आपका understanding level is not 100%, so that's completely normal. Even if it's at 10%, so that's completely normal. Like I said, you have plenty of examples lined up, so don't worry about it. ठीक है. However, बस formula आपने याद रखना है. ठीक है, वैसे इसका भी formula आपको given होता है by the way. ठीक है, तो वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन like I said, we're going to do so many questions कि आपको ultimately याद ही हो जाएगा. So let's do one more example. I mean, another example, not one more example, another example. So let's say this time we have 1 plus 2x to the power 7. ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि find the first 5 terms. अच्छा, वैसे इस expansion में total terms कितनी होंगी जरा मुझे ये बताएं. 8 होंगे. ठीक है. So I ask you to find the first 5 term in ascending powers of x. ठीक है. Normally हमारे पास terms हमेशा ascending powers of x में ही आती हैं, लेकिन question में भी लिखा हुआ होगा. So if you see this written anywhere, so don't get confused कि ये क्या बोल रहा है in ascending powers of x. You can see कि यहाँ पे भी जो हमारे पास terms आई हैं वो ascending powers of x में ही आती हैं, आई हैं. So what we're going to do is, the first thing we'll do is write down the formula. The formula is NCR, a raised to the power n minus r, b raised to the power of r. ठीक है, और r हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम 0. अच्छा, यहाँ पे r हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेके 7 तक जाएगा, और are we gonna stop somewhere? 5. Not 5 but 4. क्यों? क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म्स जब 0 रखेंगे तो एक टर्म आ जाएगी, सही है. 1 रखेंगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी, 2 रखेंगे तो तीसरी टर्म आ जाएगी, 3 रखेंगे तो चौथी टर्म आ जाएगी, 4 रखेंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी. बिकॉज यहाँ पे जो हमारी काउंटिंग है वो 1 से नहीं शुरू हो रही, इधर हमारी काउंटिंग जो शुरू हुई है ना वो 0 से शुरू हो रही है. सही. सर आर का क्या मतलब होता है सर? आर इज बेसिकली, देखो आर जो है उसकी अपनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. आर इज समथिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 and then goes all the way to whatever n is equal to, in this case 7. So r की अपनी कोई significance नहीं है. सही. सही सर. Okay. Now t1 का मतलब फर्स्ट टर्म हम निकालेंगे कैसे? r को 0 रख के. So कैसे? 7c0, 1 raised to the power 7 minus 0, so that's 7, 2x to the power 1. ठीक है, first let's write down whatever it is that we need to work out vertically, and then we'll do it in the next step. 7c1, 1 raised to the power 6, 2x. अच्छा, ये 2x पे power पहले 0 आनी थी, मैं गलती से 1 लिख दी. 2x power 1. एक, just to give you guys a quick sort of like a trick or something to make sure कि आपने सही किया. जब आप ये पावर्स ऐड करें, so these powers summed up should always be equal to n. कभी n से greater नहीं होनी चाहिए, n से कम नहीं होनी चाहिए. Like for example 7 plus 0 is 7, 6 plus 1 is 7. तो ये आपने ख्याल रखना है. 7c2, 1 raised to the power 5, 2x to the power 2. 7c3, 1 raised to the power 4,
2x to the power 3, 7c4, 1 raised to the power 3, 2x to the power 4. ठीक है, ये सेकंड टर्म हमने निकाली कैसे, r को 1 रख के, थर्ड टर्म हमने निकाली कैसे, r को 2 रख के, फोर्थ टर्म हमने निकाली r को 3 रख के, फिफ्थ टर्म हमने निकाली r को 4 रख के. सही है. नाउ लेट्स वर्क दिस आउट वन बाय वन. अब इधर एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आपके पास सिर्फ x नहीं है, आपके पास बल्कि 2x है. सो व्हेन यू आर डूइंग 2x होल स्क्वायर, डोंट राइट दिस एज 2x स्क्वायर. ठीक है, गलत हो जाएगा. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू 2x होल स्क्वायर? 4x square. 4x. 4x square. ठीक है, ये ख्याल रखिएगा बस. सो 7c0 is going to be 1. 1 to the power 7 is going to be 1. 2x to the power 0 is also going to be 1. So that means our first term is straight away equal to 1. Second term क्या होगी हमारी? 7c1 निकालो. That's going to be 7. 7 into 2 करोगे. So that's 14x. 7c2 निकालें आप लोग. Let's see what 70c2 is equals to. निकालें और मुझे बताएं क्या आ रहा है आप लोगों का. 21. 21. ठीक है, so 21 इसको मैं पूरा इग्नोर कर रहा हूँ. ठीक है, I don't want this to come in between and bother me, so I'm just completely ignoring it because it's 1. Had it been anything other than 1, then we wouldn't have had the liberty to ignore it. Now we have the liberty to ignore it. 2x whole square को लिखने से पहले, मतलब before you write down the final answer, just write 4x square. ठीक है, try and be as elaborate as possible. The more elaborate you are, the less chances of you getting it wrong. So, अब मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप में मैं किन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. Tell me what 7c3 is. Tell me what 2x whole cube is. So 7c3 is 35. 35 And 2x whole cube will be 8x cube. 8x cube. Very good. अगला स्टेप बताओ. 7c4 is also 35. 35. And what is 35 going to get multiplied by? 16. 16x. 16x to the power 4. ठीक है. So here's what we're looking at. We're looking at 1 plus 14x plus 21 into 4 is 84x square plus 35 into 8. Gonna need a calculator for that. 280 x cube plus 35 times 16. 560x. 560x to the power 4. To the power 4. Again, हमारे पास first 5 terms in ascending powers of x. Yep. And that's a Yes. ठीक है. So let's do. हाँ बोलो. What does C stand for? What is what? T. C in this. C is basically, C को हम बोलते हैं combination. ये जब हम permutation combination करेंगे ना, तब we'll have an idea कि C basically क्या. आपका C होगा और calculator में C के बराबर एक होगा P. That's permutation. So ये जब हम permutation combination करेंगे ना, तब हम देखेंगे. सर ये हम 1 को बार बार क्यों नहीं ऐड करते? लाइक 1 को आपने सिर्फ एक दफा ऐड किया, बार बार क्यों नहीं ऐड करते? क्योंकि it's only the first term that's 1. बाकी सारी terms जो है वो 1 के, वो 1 से हटके हैं. उसमें x है या किसी में x square है, x cube है, so on and so forth. Right. Okay. Okay. Now let's do another example. Let's say. अच्छा अभी तक हमने सब किया था plus के साथ. Sir, can I just take a screenshot of that, please? Yeah, sure. Okay, thank you. You're welcome. Now let's see what happens if we have a minus sign in between. ठीक है. अच्छा अभी कोई spoiler ना दे please. अगर आपको already पता है तो. Let's try and discover it and see what happens. So let's say you have 1 minus 3x to the power 9. And let's say you want to find out the first 4 terms. Okay, 4 से सही अंदाजा नहीं होगा. Let's find the first 5 terms in ascending powers of x. ठीक है. So first 5 terms का मतलब और हमारा शुरू होगा 0 से and then it's going to go till 4. ठीक है. Okay, so let's have the first term for which we'll have r equals to 0. अच्छा ये चीज आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है. ये मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ because later on we're gonna try, I mean not try, but we're gonna pick up a pattern आगे जाके, and obviously we'll be able to do that once we've solved like a handful of questions. ठीक है.
So ये मैं अभी कर रहा हूँ, आगे जाके we'll abandon writing this. So for the first term, we'll have r equals to 0. That means 9c0, 1 raised to the power 9 minus 3x. Yes, you have to take the sign into consideration also. 0. So we'll work this out what this is in the next step. Then for the second term, we'll have r is equals to 1. So let me put a colon there and not an equals to. So yeah, उसके लिए we will have 9c1, 1 raised to the power 8 minus 3x to the power 1. And then 9c2, 1 raised to the power 7 minus 3x to the power 2. And then 9c3, 1 raised to the power 6 minus 3x to the power 3. ये आपका r2 आ गया, ये आपका r3 आ गया. And then finally r4, 9c4, 1 raised to the power 5 minus 3x to the power 4. Okay. Now, the first term, as you guys have been have probably have an idea now, is equal to 1. ठीक है, because हमारी binomial की भी पहली term 1 है और everything else doesn't matter. If the first term is 1 in the binomial expansion, then in your expansion also, then the first term is going to be 1 in the expansion. ठीक है. Second term, however, 9c1 is going to be 9. 9 को multiply करेंगे by minus 3x, तो ये हो जाएगा minus 27x. Now, third term में क्या करेंगे? Let's work out 9c2, which is 36. अब आप मुझे बता सकते हैं 36 को हम किससे multiply करेंगे? Minus 3x. 9. 9x. 9x square. ठीक है, minus 3x whole square, which will then ultimately become 9x square. ठीक है, साथ में लिखते भी रहते हैं 1. या चलो we'll do that. इकट्ठा कर देते हैं. फिर let's have the fourth term, जो कि है 9c3. That's 84. 84 को हम किससे multiply करेंगे बता सकते हैं जरा? Minus 27x cubed. Very good. Minus 27x cubed. And then can I have the fourth term? नाइन सी फोर होगा आपका कितना हो रहा है 9c4 जरा बताएं 126 126 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे Minus 81x. minus 81 are you sure Plus, yeah, positive 81x power 4. ठीक है now let's write this nicely so we're looking at 1 minus 27x plus let's see what 36 times 9 is so that's 324 x square let's see what 84 times minus 27 is so that's अब क्या आएगा अब आएगा minus ठीक है so that's minus 2268 x cube and then you'll have a plus 126 times 81 so you're looking at 10206 x to the power 4 ठीक है अब अगर आप से कोई कहे कि इन साइंस के जरा पैटर्न पे गौर करें हम बताएं कि if you're able to I mean observe the signs and tell me if you're able to identify a pattern so can you guys It goes minus positive positive minus positive minus positive. yeah so basically the signs are alternating start होता है पॉजिटिव से अच्छा स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव से ही होगा बिकॉज अगर आपकी पहली टर्म पॉजिटिव है एंड everything else is going to be either 1 or raised to the power of 0 which is also equal to 1 so your first term is always going to be positive then क्योंकि second term में r जो होता है वो क्या होता है r आपका एक odd number होता है which is why you have a negative value फिर third term में r एक even number होता है and we know very well कि अगर एक negative value को हम raise करते हैं to an odd power कोई भी नेगेटिव वैल्यू को अगर ऑड पावर पे रेस कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा लेकिन अगर हम किसी नेगेटिव वैल्यू को हम रेस करते हैं टू एन इवन पावर इन दैट केस हमारा आंसर क्या आएगा इन दैट केस हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा व्हिच इज व्हाई सिंस वी स्टार्ट फ्रॉम 0 0 इज सॉर्ट ऑफ एन इवन नंबर ठीक है तो इसलिए आपका जो साइन का पैटर्न होता है वो होता है प्लस माइनस ठीक है और ये आपका दिस विल कंटिन्यू फॉरएवर प्लस माइनस 1 एंड सो फोर्थ ठीक है so this is the pattern that I wanted you guys to observe and hopefully सबको समझ आ गया any questions so far anything that we've done so far that's not No, clear sir. सर ये जो दो नंबर्स हैं a और b जैसे 1 और -3x सर क्या ये दोनों नेगेटिव हो सकते हैं या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है हमेशा दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन that's very rare I haven't मतलब there is no mathematically there is no problem in both of them being negative but I haven't come across a question where they're both negative अगर दोनों नेगेटिव हैं भी तो आप a को माइनस ले लोगे नो बिग डील
सर ये जो हमेशा a जो होगा वो हमेशा 1 ही होगा या वो नहीं डिफरेंट नहीं नंबर नहीं भी हो नहीं सकता है? नहीं अभी क्योंकि हम लोग जरा we're doing relatively simple examples, that's why a हमारा 1 चल रहा है. There will come a point where a could be 2, 3, could be a fraction also, but that'll come later on. Okay, so I'm going to give you guys a couple of just probably 2 questions to solve because they're very lengthy, I know. So I want you to do 1 plus, let's say 5x, but the 5x ज़्यादा हो जाएगा. क्या क्या कर चुके हैं? 3x कर चुके हैं, 2x कर चुके हैं, तो करना पड़ेगा. चलो अब तो I want you to find the first 3 terms. ठीक है. चलो करें इसको. आप लोग करें इसको. I'm just gonna discuss the answer in 2-3 minutes. Okay. Okay. Can I have the answers if you guys are done? Sir, for the first one, I'm getting 1 plus 35x plus 525x square. So I'm getting the same thing. So yeah, 7c1 into 5 is 35x. So yeah, what about the second one? You guys are done? Sir, 1 minus 54x plus 1296x square minus 18144x cube plus 163,296x square. 163,296 6 x square. ठीक है. Can the rest of you check while I'm मतलब आप लोग भी देख लें और मैं भी इसको जरा फटाफट चेक कर लूं. $54 सही है. 92 into 3 6 is 1296. And C3 into 6 to the power 3 is 18144. And C4 into 6 to the power 4 is 163296. Say it. Good job. All right. Any questions? Anyone who is unable to solve either of the 2 parts? No, it's not getting the Sir, right. I'm still doing the second one. Chalo, karo. I'll wait for 2 more minutes. Sir, minus 6x whole cube का होगा minus 216 and then X cube. x के साथ cube लगेगा, Yeah. right? Yeah. All right. Now, अब हम देखते हैं. अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल किए थे, बल्कि अभी किसी ने पूछा भी था, I think it was Nafe, कि is A always going to be 1? Well, let's find the answer to that. I mean, the answer to that obviously तो मैंने पहले दे दिया था, is no, it's not always going to be 1. But let's see what happens when it's not 1. ठीक है. So let's say you're asked to expand 2 plus 3x, the whole thing, to the power 5. ठीक है. And you're asked to find, या चलो उसके पूरी की expansion करते हैं. ठीक है. कितनी होंगी total terms जल्दी से बताओ. If I have 2 plus 3x to the power 5, 6. I have total of 6 terms. ठीक है. Great. So let's start with R0, okay, which is going to be our first term. So that means we're looking at 5C0, 2 to the power 5, 3x to the power 0. Then we'll have 5C1, okay, yeah, R हमारा 1 आ गया, 2 to the power 4, 3x to the power 1. And then we'll have 5C2, 2 to the power 3, 3x to the power 2, 5C3, 2 to the power 2, 3x to the power 3, 5C4, 2 to the power 1, 3x to the power 4, and then finally 5C5, 2 raised to the power 0, 3x raised to the power 5. ठीक है. Now this time the only difference is कि पहले हम 1 को completely ignore कर दिया करते थे ना, और पहली टर्म 1 आंखें बंद करके लिख दिया करते थे. अब हम ये नहीं करेंगे. अब जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी? हमारी फर्स्ट टर्म होगी 2 to the power 5, because 5C0 1 होगा, 3x to the power 0 भी 1 होगा. So our first term this time will be 2 to the power 5 and not 1. And then, we'll just go about figuring out the rest of the terms. So 5C1 is going to be 5.
2 to the power 4 is going to be 16 into 3x. 5c2 is going to be 10. 2 ka cube is going to be 8. 3x whole square is going to be 9x square. 5c3, let's work out 5c3. 5c3 is 10 also. 10 into 4 into 27x cube. Then 5c4, which I believe is 5. Into 2 into 3 to the power 4, 81. X to the power 4. 5c5 is 1. 2 to the power 0 is also 1. 3 to the power 5 is 243. X to the power 5. So then you can write all these terms nicely. Kg2 plus 3x to the power 5 की जो expansion है वो बराबर है 32k plus 80 into 3 is 240x. 9 into 8 is 72, 720 x square. Please, if I make a calculation error, feel free to point out. 27 times 4 is 54, 108, so 1080. No, wait, 27 times 4 is not. Wait, कर ही लेते हैं calculator से जरा. Yep, 1080. It is 1080. Okay, thank you. X cube plus 5 into 2 into 81, so that's 810. X to the power 4, and then finally 243 x to the power 5. ठीक है, so ऐसे नहीं है कि अगर 1 नहीं है तो बहुत ही कोई मुश्किल चीज है और आप जो है वो पता नहीं क्या होगा अगर 1 नहीं है तो it's pretty simple. All you gotta do is just not ignore as we used to when it was 1. ठीक है, तो बस मैं आप लोगों को इसका एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर जरा हम थोड़े इसके questions करेंगे from the book. So I'll just give you guys one more example. 3 minus 2x to the power 7. इसकी निकाल के दें मुझे just the first 4 terms. ठीक है, ज़्यादा काम नहीं है, just the first 4 terms. Go. सर जो ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है वो कभी कभार नेगेटिव हो सकती है? नहीं, आपके केस में नहीं हो सकती. लेटर ऑन जब आप लोग इसको ए लेवल्स में पढ़ोगे तब विल कम अक्रॉस नेगेटिव पावर्स, बट नॉट राइट नाउ एटलीस्ट. Okay. Sir, could you tell me specifically why we use 5C in this question? Sorry? Why did we use 5C and not any other number, 6 or something? If we have a specific thing the question tells us. Yeah, I'm not. I can't understand what you're saying. आपकी आवाज बहुत ही robotics से आ रही. Can you type what you're saying? Sir, in this question that we just did, why do we have to use 5C? Why not any other number? Because what's the power? It's always NCR. So if the power is 5, then you'll have to use 5. If the power is 7, which it is in the example that, I mean, in the question that I've given you guys to solve, so you'll use 7C. Okay, sir. Sir, done. ठीक है, just So wait done. for a minute, फिर discuss करते हैं. Sir, I'm done. All right.
Okay, so can I have the answer, please? -2187 Mm-hmm. -102066 206x, plus right? Plus. yes, Mm-hmm. 20412x square 20412x square -22680x cube. ठीक है, let me just double check. अच्छा, वैसे आप लोग ये परेशान मत हो कि इतने नंबर्स बड़े क्यों आ रहे हैं, क्या मैं ऐसे क्वेश्चंस दे रहा हूँ कि नंबर्स इतने बड़े आ रहे हैं? इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं where you come across such gigantic numbers. Okay, so 3 to the power 7 is 2187, so good job there, Iman. And then you have 7c1, which is 7 multiplied by 3 raised to the power 7 minus 1, so that's 6 into 2, so 10206. Good job. अच्छा जी, फिर आ जाते हैं 7c2 multiplied by 3 raised to the power 5 and 2 raised to the power 2, so that's 20412. Good job. फिर आ जाते हैं 7c3 3 raised to the power 4 2 raised to the power 3 22680. ठीक है, सही है. Good job, Iman. Anyone who's not getting the right answer? नो सर, क्या? Mine is also correct. ठीक है, चलें फिर हम चलते हैं आगे. Let me. अच्छा, अब एक काम करते हैं. Before we do some more questions, ठीक है, सर एक चीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. Let's try and observe a pattern here. ठीक है, so देखो, the reason why I always do that, भले मैथ हो या एड मैथ्स हो, is because जितने भी सारे रूल्स बनते हैं ना आपके, फॉर्मूलाज वगैरह, ये सब एक पैटर्न की वजह से बनता है. ठीक है, there's a pattern that's being followed and looking at that pattern, हम क्या करते हैं, हम उसको एक फिर एक जनरल रूल बना देते हैं. सही है. So that's exactly what we're going to do over here. We're going to try and look for a pattern, and then if you're able to find that pattern, हम उसको फिर एक general rule बनाते हैं. Okay, so here we go. Let's say R हमारा 1 है. ठीक है, अच्छा पहले तो ये रूल है कि x की जो पावर है एक्सपेंशन में वो 1 के बराबर है. ठीक है, so if R is equals to 1, what is the power that we have on x? 1. It's 1. ठीक है, अच्छा, so could be a coincidence, right? अगर r की पावर 2 है, या सॉरी अगर r की वैल्यू 2 है, सॉरी नॉट पावर, अगर r की वैल्यू 2 है, तो what is the power that we have on x? 2. 2. ठीक है, अगर r 3 के बराबर है, so what is the power that we have on x? 3. 3. अगर r 4 के बराबर है, so what is the power that we have on x? It's 4. अगर r 5 के बराबर है, what is the power that we have on x? It's also 5. सही है. अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे r 2 के बराबर है, तो x स्क्वायर है. r 3 के बराबर है, तो x पे भी पावर 3 आ रही है. r 4 के बराबर है, तो x पे भी पावर 4 आ रही है. ठीक है. Now, how exactly is this helpful? I'll tell you how this is helpful. Let's say, अच्छा ये सिर्फ कब है? ये सिर्फ जब है जब आपके पास x की पावर 1 है. एक्सपेंशन में x की पावर 1 है. समटाइम्स ये होगा कि आपसे कहा जाएगा 1 + 3x स्क्वायर को एक्सपेंड करो, तब ये वाली चीज काम नहीं करेगी. ठीक है, तो उसके लिए एक सेपरेट रूल है. अभी हम ये देख रहे हैं कि जब x पे पावर 1 है. So let's say you have 1 + 2x to the power 9, and I ask you to find the coefficient of x to the power 5. ठीक है, hypothetically speaking. अब इसको करने का एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, हम स्टार्ट करें, हम पहले निकालें फर्स्ट टर्म r को 0 रख के, फिर हम निकालें सेकंड टर्म r को 1 रख के, फिर हम निकालें थर्ड टर्म r को 2 रख के, so on and so forth. And then once we've done the entire expansion, somewhere along the line we'll find the coefficient of x to the power 5 and give that as our final answer. But ये इंतहाई एक फारिग सा तरीका है इसको सॉल्व करने का. ठीक है, there has to be an easier way. Now we know कि अगर हमें x पे पावर 5 ही चाहिए, so there is a trick to it, there is a pattern to it that we can use to find just the coefficient of x to the power 5, because that's what we have to do, right? We have to find just the coefficient of x to the power 5.
So मुझे बताओ, do I need to expand the entire thing? पहले तो मुझे ये बताओ, do I have to expand the entire thing to find No, the sir. coefficient of x to the power 5? No, I don't. ठीक है. I know कि कोई भी टर्म निकालनी हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो एक फॉर्मूला से निकलती है, NCR a raised to the power n minus r b raised to the power r. ठीक है. I know कि n जो है वो 9 के बराबर है. ठीक है. I know a जो है वो 1 के बराबर है. I know b जो है वो 2x के बराबर है. किसी तरह से अगर मुझे r की वैल्यू पता चल जाए जो मैं रख लूं इस फॉर्मूला में, that ends up giving me the coefficient of x to the power 5, that will do the job, right? Now अभी तक हमने जो पैटर्न ऑब्जर्व किया था उसमें हमने क्या देखा? हमने देखा ना कि भाई अगर x की पावर 4 है तो r क्या होना चाहिए? r 4 होना चाहिए, राइट? अगर x की पावर 5 चाहिए तो r क्या होना चाहिए? 5. क्या होना चाहिए यार? 5 होना चाहिए. So that means यहाँ पे if I want x to the power 5 का coefficient, so all I gotta do is I just gotta replace r with 5. ठीक है? So that's exactly what I'm going to do now. I'm going to do 9c5 a, which is 1 raised to the power 9 minus 5, and 2x, which is b raised to the power of 5. And you can probably see where this is going, कि जब 2x पे power 5 होगी, regardless of what the coefficient is, लेकिन x पे जो power आएगी वो 5 ही आएगी. Now let's work out what 9c5 is. So 9c5 is 126. 1 को ignore कर देते हैं. Multiplied by 2 to the power 5, so that's 32 x to the power 5. So 126 times 32 is 4032 x to the power 5, which means कि जो हमारा final answer होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ 4032 होगा. Why? Because the question just wanted the coefficient. अब इससे हमने क्या किया? इससे हमने एक general rule बना दिया. ठीक है? What is that rule? That rule is the following. If x power 1 is in the second term, okay, if x power 1 is in the second term, the value of r is the required power of x. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, क्या एक्सपेंशन है आपकी आपका सॉरी बाइनोमियल क्या है? इट्स 1 plus 2x to the power 9. ठीक है. व्हाट इफ यू वांटेड द कोएफिशिएंट ऑफ, लेट्स से यू वांटेड द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब चाहिए तो आप r की जगह क्या रखते हैं? 3. r की जगह 3 रखते हैं. व्हाट इफ यू वांटेड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 6, तो आप r की जगह क्या रखते हैं? आप r की जगह 6 रखते हैं. व्हाट इफ यू वांटेड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो आप r की जगह क्या रखते हैं? सीधा सीधा r की जगह 2 रख देते हैं. ठीक है. सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स. क्या फर्स्ट हमने क्या किया? हमने कुछ एक्सपेंशन करके एक पैटर्न देखा. उस पैटर्न की मदद से वी मेड आवर जॉब इजी and we figured that if you want just the coefficient of a certain power of x, all you got to do is replace r with that power of x. ठीक है. अच्छा, अब इसमें एक कैच है. ठीक है ना? इसमें कैच क्या है? इसमें कैच ये है कि लेट्स से, और दिस इज द पॉइंट वेयर सारे फॉर्मूलाज वगैरह सब खत्म हो जाते हैं और आपको सिर्फ अपनी अकल का इस्तेमाल करना होता है. ठीक है. दैट विल हैपन रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर सब्जेक्ट दैट यू डूइंग, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी फॉर्मूलाज यू मेमोराइज, देयर विल कम अ पॉइंट कि आपको अपनी अकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड फॉर्मूला जो है वो आपको एक हद तक ही साथ देगा. ठीक है. नाउ आई टेल यू व्हाट आई मीन बाय दैट. ठीक है. और ये चीज हम डिटेल में करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. अभी बस मैं आप लोगों को एक टीजर दे रहा हूं सॉर्ट ऑफ. सो लेट्स से यू आर गिवन 2 minus 3x square to the power, let's say 7. Okay, and मैं आपसे कहूं कि find the coefficient of x to the power 6. Okay, क्या कहा मैंने आपसे कहा कि find the coefficient of x to the power 6. अब यहाँ पे अगर आप आंखें बंद करके ये वाला रूल लगाते हैं ना कि जी x to the power 6 चाहिए ना, तो हम r की जगह रख लेते हैं 6. तो मुझे बताओ ये रूल यहाँ पे काम करेगा? Yes. You think it will? No, sir. अच्छा, let's see. Let's not give the final answer. या let's not confirm कि yes or no. Let's see कि ये रूल यहाँ पे काम करेगा या नहीं करेगा. ठीक है. नहीं सर, क्योंकि बोलो सर. बोलो. क्योंकि सर वो x स्क्वायर दिया हुआ है, वो x to the power 1 नहीं है. x to the power 1 है. ठीक है. अच्छा, अब let's see कि अगर ये नहीं काम करेगा
So let's see if we can find a way to make it work, or maybe not find a way to make it work, maybe find out what value of r we need to plug in here. So 7c6 2 raised to the power 7 minus 6, okay, so far so good, minus 3x raised to the power of 6, sorry, minus 3x squared raised to the power of 6. अब मुझे बताओ, do you think this will really give you the coefficient of x to the power 6? You think so? Sir, 12 का आ जाएगा। No, sir. 12 आ जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब कि हम r जो भी रखेंगे, कोफिशिएंट किसका आएगा? अगर हम r, लेट्स से हम r रखते हैं 4, तो कोफिशिएंट किसका आएगा? 8 का आएगा, ठीक है। If I plug in r as 4, I will end up finding out the coefficient of x to the power 8. Why? Because we can see कि x पे स्क्वायर है, तो अगर हम 4 रखेंगे तो 2 times 4 8 हो जाएगा. So if you really want the coefficient of x to the power 6, so आपकी अकल के मुताबिक हमें r की जगह क्या रखना चाहिए? 3। हमें r की जगह 3 रखना चाहिए, ठीक है। Why? Because हमारा जो फॉर्मूला था वो तो था सिर्फ और सिर्फ x to the power 1 के लिए, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी वेरिएशंस भी आ सकती हैं, इसमें x to the power 2 भी आ सकता है, ऑल्दो ऐसा बहुत कम आया है, ठीक है, तो ऑफन आता नहीं है। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू टू नॉट ब्लाइंडली रिलाई ऑन द फॉर्मूला, ओके, because that formula has its own restriction. Just like every shortcut, there are certain set of restrictions. So इधर भी एक restriction है. Okay, so अगर हम R3 रखते हैं, so let's see how that works. So that will work by 7c3 2 raised to the power 7 minus 3, so that's 4, and minus 3 raised to the power of minus 3 x squared raised to the power of 3. Yeah, so 7c3, let's work this out. So 7c3 is 35 into 16 into minus 27 x to the power 6. You can probably see where this is going. 35 times 16 times minus 27. So you're getting minus 15,120 x to the power 6. And you can see you did end up getting the coefficient of x to the power 6. G, bole. Sir, what if the coefficient of x is not like 6? What if it's 5 or 7, which is not, ऐसा हो नहीं सकता, मतलब the question will be designed accordingly, ठीक है, because r is not something that can be in decimal, at least not for now. Later on जाके जब आप लोग A levels में करोगे तो होगा, but for now ऐसा नहीं हो सकता. It has to be an integer form, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि r is going to be a decimal value, क्योंकि वो decimal में हम solve नहीं कर सकते, ठीक है। Any questions so far? No, sir. No, sir. अपने कैलकुलेटर में भी करें ना 5c and let's say 2.5, तो नोटिस कि वो भी एक एरर दे देगा, ठीक है। Anyway, so ठीक है, I will stop here. Next क्लास में इंशाल्लाह हम लोग इसके करेंगे कुछ questions from the book, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़े से कुछ questions दूंगा इसके as homework, ठीक है, just expansion questions, nothing more than that. So yeah, I will see you guys inshallah on Friday. So take care, guys. सर Thank you, sir. Allah Hafiz. You're welcome. Thank you, sir. सर मैंने आपसे पूछना था दो चीजें थी। एक तो सर हमने लॉग्स का चैप्टर कर लिया, बिकॉज़ नहीं, we haven't done logs. We've done indices and surds. तेरा वो भी मैं check कर लूँ if we have done it. सर वो किया हुआ है। क्या हुआ है? ओह हाँ, वो भी किया ठीक है सर, मैं पूछ रहा था। लॉग्स नहीं किया हुआ हमने। लॉग्स Right. बेसिकली एक मैं कराता हूँ आफ्टर आई एम डन विद, मतलब लॉग्स और लिनियर लॉ में आगे पीछे कराता हूँ, इसलिए मैंने अभी तक लॉग नहीं कराया। राइट सर। और सर एक और चीज थी कि मेरी सर ये वाली क्लास जो एड मैथ्स की है सर, वो मेरी केमिस्ट्री क्लास के साथ क्लैश कर रही है। लाइक केमिस्ट्री मेरी 5 से 6 बजे केमिस्ट्री होती है सर। सर इज इट पॉसिबल कि एड मैथ्स क्लास थोड़ी सी आगे हो सकती है? 5 से 6 तो कितना आगे करूँ मैं? 6 बजे के बाद सर लाइक नहीं 5:55 तक हो जाए। 5:55 तक अभी क्या है? 4:30 to 5:30 होती है ना, फिर 5:30 to 6:30 होती है, तो मुझे स्टार्ट करते करते 5:45 हो ही जाते हैं। सही सर, ठीक है। ठीक है। The thing is, it's been a while, यही टाइम टेबल चलता आ रहा है, so if I announce that I'm changing it now, तो फिर students might have a problem because everybody else has planned their tuitions according to this timetable now, so it's gonna make a mess. राइट सर, ठीक है, चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़।